फ्रॉड भी हुआ तो फौरन बैंक को खबर कर दीजिए, नुकसान कम। दादू अगली बार ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Uzma Jafri. Let's see what we have lined up for you this week. Pakistan continuously exploiting resources in the illegally occupied POK. Women health workers stage protest against unjust authorities in the illegally occupied Gilgit-Baltistan. NABARD launches My Pad, My Right project under centre-sponsored scheme in Anantnag. Construction work in full swing on 144A highway in Rajouri. And in our special section of Incredible India, we'll take you to see the shrine of Lord Sharad Basweshwar in Kalaburgi city of Karnataka to witness the Rath Yatra, which was attended by the scores of devotees from various states of India. Pakistan-occupied Kashmir is a region surrounded by lush green mountains rich in resources. Therefore, it's not a wonder that Pakistan authorities have yet again taken exploitative means to worsen the lives of people living there. This comes at a time when the people in the illegally occupied region of Kashmir are already suffering the faulty policies, skyrocketing inflation and human rights violations under Pakistan. A report. The people of Pakistan-occupied Kashmir have been frequently expressing their resentment against the exploitation they have to suffer at the hands of Pakistan. Recently, locals were seen reprehending the constant depletion of forest cover due to smuggling practices made possible by corrupt governance under Pakistan authorities. They accused that while the government employees were conspicuously complicit in several cases of smuggling, they were brazenly carrying out illegal activities on other occasions. They also lamented that people who should have prerogative over the resources of the forest had become vulnerable for the local authorities, who operate at the instructions of Islamabad, had no regard for the forest or the people who depend on it for their sustenance. गैर कानूनी तौर पे जंगल काटा जाता है, जैसे चकार का इलाका है, जैसे डने का इलाका है, और जैसे कोटली के अंदर आप चले जाएं, जो चीड़ के दरख्त हैं, वहाँ पे चीड़ का जो जंगल है, वहाँ पे जो इलाका है, उन इलाकों में वहाँ से लकड़ स्मगल की जाती है पाकिस्तान पंजाब के इलाके में, तो वहाँ पे भी वो गैर कानूनी तौर पे जंगल काटने वालों ने जंगल का सफाया किया हुआ है. Officials of the so-called government bodies like the Forest Department have either turned a blind eye or do not spare sympathy for the plight of locals. The people of Pakistan-occupied Kashmir have continued to bear the atrocities of a corrupt and unjust regime for over 7 decades. जंगल में ऊपर आग लगी हुई है, वो सामने आग, हवा के सामने अगर इस पहाड़ी पे आग लगी, दरख्त जल रहा है, तो नीचे सेक्रेटरीट, जंगलात सेक्रेटरीट में बैठा हुआ बंदा, क्लास सेक्रेटरीट में, मोरियात सेक्रेटरीट में बैठा हुआ बंदा जो है, उसको कोई टस से मास नहीं है. वो समझता है मेरा काम तो फाइल मुकम्मल करना है, मेरा काम ये है. उसको ये परवाह नहीं है कि जंगल को आग लगी है. 384 के जंगलों में अगर आग लग जाए तो महकमे जंगलात वाले अगर किसी को फ़ोन कर दो, वो कहेगा नहीं वैसे ये किसी की ज़ाती ज़मीन है, तो वहाँ पर शायद आग लगी, जबकि देखें कि कहाँ से जंगल कहाँ तक पहुँच गया. Over the years, people in the region have come to terms with the fact that they will have to sacrifice a significant amount of their resources in order to keep the wrath of the occupying Pakistani state at bay. However, a steep rise in exploitation has left people with no choice but to mount resistance. Despite the rampant abuse and exploitation of their resources and livelihoods by Pakistan and only corrupt authorities to turn to, the people of occupied Kashmir continue to demand an end to the illegal occupation of their land
in hopes of a better future. The draconian authorities of Pakistan have made the lives of people a living hell in Gilgit-Baltistan. Hitting a new low recently, the corrupt regime forced women health workers of Gilgit-Baltistan to take to the streets as they are not able to secure jobs in healthcare services even after passing all the required exams and other appointment formalities. Take a look. Scores of women health workers staged demonstration in the illegally occupied region of Gilgit-Baltistan against what they called discrepancies and discrimination in the healthcare recruitment process. The demonstrating women accused the Chief Minister of the region of malpractice and said it was he who had obstructed their appointments arbitrarily at the 11th hour. Earlier, these women were shortlisted for the job, but they were asked to wait under the pretext of due verification processes and other standard protocols. Nearly 4 months have passed since then, and their fortunes have taken a turn for the worse, for they feel they are just a bunch of vagrants and not much that people will look up to for inspiration. हमने बाकायदा टेस्ट दिया, इंटरव्यू हो गया, 2 दिसंबर को हमारा जो है रिजल्ट आ गया। हम बहुत खुश है, सब ख्वातीन में के घरानों में जो है खुशियां आ गई कि एक हमारी उम्मीद नज़र आ गई कि हमारी नौकरी हो गई। उसी रात सीएम साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इनकी जॉइनिंग्स रोक दें, एक कमेटी तश्कील देगी, वो वेरीफाई करेगी। हमने मान लिया चलो ठीक है, 600 पोजीशंस हैं, कुछ गड़बड़ भी हुआ होगा। उसके बाद हमने बार-बार रब्ता करने की कोशिश की, हमें नज़रअंदाज किया गया। The women have also alleged that the Chief Minister of the region, Khalid Khurshid Khan, wants to appoint his own relatives and acquaintances by denying the meritorious women their jobs. These women had carried out a demonstration in the chilly winter months of January too, but they had failed to gather enough traction. Despite their repeated cries and persistent pleas, the cold hearts in power have not bothered to show any sympathy for the plight of these poor women health workers. एक महीने में कौन सा वेरिफिकेशन होता है? इसको सीएम साहब ने एक मसला कश्मीर बना रखा है। हम बिल्कुल नहीं मानते हैं, इस वेरिफिकेशन को हम मुस्तरद करते हैं। अगर फिर भी उन्होंने वेरिफिकेशन करनी है तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके आएं, यहाँ रोड पे आके हमसे वेरिफिकेशन ले लें। हम यहाँ से आज अपनी ज्वाइनिंग लेटर निकलवा के ही हम यहाँ से अपना धरना मंसूख करेंगे। These women say they are determined and will continue to hold protests until they get justice. They want their appointment letters to be issued immediately. Until then, the brave women of Gilgit-Baltistan continue to fight against all odds. Moving on. Breaking stereotypes regarding menstruation and educating women on the topic is essential in the rural areas. While individuals have taken initiatives for contributing to the cause, authorities have also come up with ways to create awareness regarding the issue. Recently, NABARD aided a women's self-help group in manufacturing and distributing sanitary napkins in Kokarnag area of Anantnag. Take a look. Jammu and Kashmir authorities are taking steps in order to break the age-old taboo and stigma associated with menstruation and menstrual hygiene, even in the rural pockets of the Union Territory. In a first-of-its-kind initiative, NABARD, or the National Bank for Agriculture and Rural Development, is aiding a women's self-help group in manufacturing and distributing sanitary napkins in Naropura village of Kokarnag in the Anantnag district. This unit is a part of the My Pad, My Right initiative launched by the NAB Foundation, a not-for-profit subsidiary of NABARD.
मेरे साथ 10 लड़कियां काम करती हैं और इसका नाम है माय पैड माय राइट। ये हमें नाबार्ड ने दिया है। हम पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रहे थे, तो हम 10 लड़कियां थी। तो इससे पहले हमारा बुटीक चल रहा था, तो वो भी हम चला रहे हैं, उसमें भी 5-6 लड़कियां काम कर रही हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब अगर हम गांव में और एक यूनिट खोले, कुछ भी पहले ये नहीं सोचा था कि सैनिटरी पैड थी, मगर कुछ भी खोले जिससे लड़कियों को मतलब रोजगार भी मिले और पढ़ाई भी कर सके, क्योंकि यहाँ बहुत बेरोजगारी है। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब क्या करूं मैं ऐसा कि जिससे हमें फायदा मिले। तो हमें ये सोचा कि मतलब मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं एमफिल हूँ, तो मैंने सोचा कि ये मैं शुरू कर ही दूँ, क्योंकि मैं नेट पे देख रही थी कि ऐसा है वैसा है। तो मैंने सोचा कि हम अब ये सैनिटरी पैड्स बनाएंगे। This self-help group, Al-Qaria, has been working relentlessly for creating awareness regarding menstrual hygiene and entrepreneurship among women. Under the project, free machines for making and assembling sanitary napkins have been provided to the group. This unit has the capacity of producing 600 to 800 sanitary napkins per day, which will ensure adequate stock of sanitary pads is available for distribution in nearby villages. These women are engaged in manufacturing sanitary napkins in their unit, which are distributed further among women. ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो बेरोजगार बैठी है घर में, तो उनको चाहिए कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करे, अपना पार्ट टाइम जॉब करे, ताकि वो अपनी तालीम को भी आगे बढ़ा सके। जैसे कि मैंने 12th किया है और मैं आगे अपनी तालीम को किस तरह से अब चला रही हूँ। लाइक घर वालों पे बोझ बनता है, कभी कभी अपने बच्चों को पढ़ाना, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, तो पार्ट टाइम जॉब करके हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने पढ़ाई को खुद आगे बढ़ा सकती है। और अगर देखा जाए जो बाकी रूरल एरियाज भी है, उनमें भी अगर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स लिए जाए, तो जो घर में बैठी हुई लड़कियां होती है उनसे क्या होगा कि मतलब उनको रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलने से क्या होगा कि वो अपने मतलब हर किसी काम को, अपनी हर किसी जरूरत को पूरा कर सकती है। और अगर ऐसा मतलब प्रोजेक्ट उनको भी मिले पैड्स का, तो उससे क्या होगा कि उनको पता चलेगा ये कितना हाइजीनिक है, कितना अच्छा है। The launch event of the unit was attended by a large number of members of the self-help group, panchayat representatives, besides officers from district administration, NABARD, health department, banks and others. Authorities plan to establish that more production units across various districts in Jammu and Kashmir for contributing to the cause. Locals lauded the initiative as it is not only a method to promote sanitation and menstrual hygiene, but also a great way to provide a source of part-time income for girls in college or housewives. ये जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के इश्यूज हैं, अभी देखें आप जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं या इवन जो हमारी माई बहनें घरों में रहती हैं, तो ये काफ़ी इशू रहता है, इनहिबिशन रहता है। और जिस तरह से आज यहाँ पे पार्टिसिपेशन हुआ, मुझे लगता है इससे अच्छा एम्पावरमेंट तो कुछ हो नहीं सकता कि वो एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात भी हो रही है और उसको कैसे हाइजीन रखा जाता है उस पे भी बात हुई, और साथ साथ में एक प्रोडक्ट जो उसमें है सैनिटरी पैड, वो खुद प्रोड्यूस कर रही है, अपने मेंबर्स को भी दे रही है और मार्केट को भी दे रही है। तो दिस इज बेस्ट फॉर्म ऑफ एम्पावरमेंट। अनंतनाग एक पहला डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर डिवीजन में जिसको हमने सेलेक्ट किया है एक पायलट के रूप में। तो मुझे इससे ये लगता है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन की समस्या तो हमारी दूर होगी, साथ में जो वुमेन एम्पावरमेंट का एक कॉज है वो भी इसमें एड्रेस होगा, और कुछ हमारी जो एसएचजी की माताएं बहनें हैं उनको इसमें थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। There is a need to spread awareness in rural women about menstrual hygiene, and initiatives like these will play a vital role in not only educating them about hygiene but also provide them with an alternative source of income. A well-connected network of roads and railways is necessary for the development of a region. Authorities in Jammu and Kashmir have launched a number of projects to make sure that even the most far-flung areas of the territory have metalled roads.
The National Highway 144A is a spur road of National Highway 44 that runs between Jammu and Poonch. Authorities in the Union Territory have stepped up construction of National Highway 144A in Rajouri district. The upgradation of the Akhnoor-Poonch highway via Rajouri is in full swing in the Rajouri district of Jammu and Kashmir. A part of the National Highway 144A, the project is being constructed by the Border Road Organization under the Ministry of Road Transport and Highways. The project has been divided into 8 phases, out of which work on 6 phases had commenced in 2022, and the work is expected to start shortly in the remaining 2. अभी सरकार ने इसकी वाइडनिंग का काम लिया है। वाइडनिंग के साथ साथ इसकी स्ट्रेटनिंग भी हो रही है। इसमें कर्व का इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है हाईवे में, और ये जो हाईवे है अखनूर से लेके पुंछ को कनेक्ट करता है। अखनूर से पुंछ की दूरी जो आज 230 किलोमीटर की है, अब वाइडनिंग और स्ट्रेटनिंग की वजह से घट के 200 किलोमीटर की हो जाएगी तकरीबन। तो 30 किलोमीटर का यहाँ पे हाईवे की लेंथ कम हो रही है। ये जो नेशनल हाईवे है ये सारे के सारे बॉर्डर एरियाज को कनेक्ट करता है पुंछ तक, और जम्मू से पुंछ तक के जितने टाउन्स हैं, मेजर टाउन्स हैं, नौशेरा हो गया, राजौरी हो गया, पुंछ है, बिम्बर गली होते हुए ये हाईवे पुंछ तक जाता है। तो इस सारे इलाके में जो डेवलपमेंट है, क्योंकि यहाँ पे औसतन स्पीड बढ़ेगी, बड़ी गाड़ियों की आवाजाही संभव हो पाएगी, और इस वजह से इसका विकास जो है वो ज़रूर आगे जाने वाला है इस जगह का। साथ ही साथ टूरिज्म के नज़रिए से ये इलाका जो है बहुत तरक्की देखेगा। The present stretch of the road is around 235 kilometers, which will be reduced to around 200 kilometers upon the completion of the project. Two tunnels are also under construction along with the construction of the highway. One is a 3 kilometers long tunnel from Akhnoor to Sundarbani, and the second one is an 800 meters long tunnel from Nowshera to Rajouri. The highway that runs from Akhnoor to Poonch via Rajouri connects all major towns like Sundarbani, Nowshera and others in the region. नौशेरा जो टनल है 700 मीटर का, इसका प्रोजेक्ट मैनेजर विथ 26 किलोमीटर 26.850 किलोमीटर रोड है, जिसके एक पार्ट है ये 700 मीटर। इसको नौशेरा टनल से ये किया जाएगा। अभी ये स्टार्टेड कर चुके हैं हम। हमारा अपॉइंटेड डेट हो चुका है 19 जुलाई 2022 में, और हमें इसको कंप्लीशन पीरियड मिला है 19 जुलाई 2024, और हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि इस डेट तक हम इसको कंप्लीट करके दें। एज अंडर बीआरओ हमारा डिपार्टमेंट जो काम करा रहे हैं ये, इससे क्या होगा, हमारा जो मिलिट्री सर्विस है उनको एसेस मिलेंगे पुंछ तक जाने, पाकिस्तान बॉर्डर तक जाने को। हमारी ट्रैफिक को, हर चीज़ को, टूरिस्ट को, सभी को बेनिफिट मिलेगा। और कालीदार में भी हमारी मेन पावर, हमारा ग्रुप काम कर रहा है, तो अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। हम कोशिश करेंगे डे नाइट इसको भी हम वैसे ही और अच्छी तरह इसको रनिंग में लाएंगे और अच्छी प्रोग्रेस निकालेंगे। टाइम से पहले कंप्लीशन करेंगे। और जो मेरी मेन पावर है, स्किल्ड अनस्किल्ड जो भी है, कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन, रहना, फूड वगैरह हर चीज़ का जो है टाइमली प्रोवाइड है और अच्छा है। Because of the widening and strengthening of the road, travel time between Akhnoor to Poonch will be reduced drastically. Once available for public use, the average speed of the vehicles running on the highway will also increase from 30 kilometers to 60 kilometers. The completion of the project will facilitate business, commerce and tourism in the region. Expected to be completed by the year 2024, the project has been designed very economically and is helping to generate employment opportunities for hundreds of locals.
ये हाईवे की जो रोड है वो सीधी हो रही है, तो इसकी वजह से क्या है कहीं नए रोजगार भी खुलेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास से अगर ये टच करके हाईवे रोड जा रही है तो उन्होंने दुकानें खोलनी है, अपने नए नए बिजनेस स्टार्ट होंगे उनके, तो ये एक अच्छा स्टेप आउट है कि अपने बिजनेस को स्टैंड करने के लिए। ये जो डेवलपमेंटल वर्क्स हो रहे हैं, कितने ज़्यादा तरक्की के काम हो रहे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं पीछे की रोड बन रही है, तो ये सब देखकर हमें काफ़ी खुशी भी होती है कि हमारा जम्मू कश्मीर भी बाकी स्टेटों के जैसे डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। और इसके लिए हम सरकार को भी मुबारकबाद देना चाहेंगे कि उन्होंने जो हाईवे का काम शुरू करवाया है, तो इसकी बदौलत हमारे कुछ जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको रोजगार भी मिला है। The construction of National Highway 144A will not just connect the twin border districts of Rajouri and Poonch, but will also be very useful for the army movement during war times. And now, in our special section of Incredible India, we will take you to Kalaburgi city of Karnataka, where the historic event of Sharna Basveshwar Rath Yatra was recently celebrated by thousands of devotees with great religious fervour. Each year, the festival attracts scores of devotees from various parts of the country who throng the ancient temple to commemorate the death anniversary of 18th century Lingayat saint and scholar. Devotees from the southern states of Maharashtra and Andhra Pradesh dance to the beat of the drums as they throng the Sharana Basveshwar temple in Kalaburgi city of Karnataka. In a show of great devotion and religious fervour, they all gathered here for celebrating the Sharana Basveshwar Rath Yatra, a festival celebrated to mark the death anniversary of the 18th century Lingayat saint scholar Sharana Basveshwar. This was the 201st death anniversary of the saint. It is believed that Sri Sharana Basveshwar was a renowned saint of the Lingayat sect who was known for his doctrine of Dasoha, giving is earning, and Kayaka, the advancement of karma. सोमवार रविवार के दिन शाम 6 बजे रथोत्सव हो गए। वो रथोत्सव को चालने देने के लिए शरण बसवेश्वर संस्थान के 8वें पीठाधिपति परम पूज्य डॉक्टर शरण बसवप्पा अप्पा और 9th पीठाधिपति चिरंजीव कुमार दोड्डापप्पा आके वो रथोत्सव के ग्रीन सिग्नल देके चालने दिए थे। और यहाँ के यात्रा महोत्सव के लिए सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र सभी राज्य से लोग पैदल चलाते हैं आज के शरण बसवेश्वर का दर्शन लिए हैं। My native is not the Gulbarga. I'm from Raichur district, Manvi Taluk, and I came here for my education. And from then I came to know that the importance of the Lord Sharana Basveshwar and the devotees coming from the different parts of the world and also different parts of the state in and around Karnataka region. And I found there is a lot of devotees coming and seeking the blessings of Lord Sharana Basveshwar and the Pithadipati, 8th Mahadasava Pithadipati Lord Pujya Sharana Basvappa Appaji and present Pithadipati, 9th Dasava Pithadipati Chiranjeev Doddapappaji's blessings, all showering all the dreams of all the devotees. And I could figure out that there are many people coming by walk during the 201 Yatra Mahotsav, which has been organized 2 days back. As the Rath Yatra is one of the major religious gatherings in the southern state of Karnataka, a pool of devotees from various parts of southern India throng the festival. Devotees walk miles from their villages to reach the sprawling temple complex and partake in the annual Rath Yatra or car festival as a part of customary practice in the region. It is a customary practice in the region that the followers of the saint conduct padayatras from their villages to the temple to offer their obeisance to saint during the Gard festival. The Samadhi of the saint Sharana Basveshwar is enshrined at the center called Garbhagudi. The procession, also known as Rathotsav, is preceded by Uchai, in which a colourfully decorated small chariot is drawn around the shrine, marking the death anniversaries of other saints and scholars. बहुत बड़ा यात्रा महोत्सव यहाँ पर हमारे कलबुर्गी में श्री शरण बसवेश्वर महाराज जी का चल रहा है। लाखों लोग यहाँ पर ये यात्रा महोत्सव में आके लोगों का
यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हैं, सभी लोग शरण बसवेश्वर महाराज जी का दर्शन करने के लिए और ये यात्रा महोत्सव में यहाँ पर आए हैं। तो मैं इस मौके पे मैं सभी हमारे गुलबर्गा निवासियों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ शरण बसवेश्वर महाराज जी का यात्रा महोत्सव का, और शरण बसवेश्वर महाराज जी का आशीर्वाद हमारे सब पे रहना बोल के मैं प्रार्थना भी करता हूँ। There were more than lakh of the people coming, and simply none of the people or devotees come over here just for the sake of enjoyment or anything. Unless there is a power, there is a dream fulfillment blessings which is been showering by Lord Shran Basveshwara, and I could see that the people are going not only with their happy faces, all are going with the very divine mindset in such a way that they are going to get all the dreams, which is again prayings and all the dreams which are supposed to be come to true, not only in terms of the money and also in terms of the respect, in terms of the value. The Sharan Basveshwar temple administration had put in the necessary crowd control mechanisms in place to ensure successful conduct of the yatra. As the sky turned dark, the scene at the Yatra festival is lit up with lamps as priests perform arti with incense sticks and bells that echo through the divine environment. Devotees believe that Saint Sharan Basveshwar had foreseen his death and accordingly passed away 5 days after the holy celebrations at Dasoha Mahamani. मैं यहाँ अब शरण बसवेश्वर के दर्शन के लिए आई हूँ। हम जो भी मन्नतें मांगते हैं वो पूरा करने के बाद यहाँ दर्शन लेके पुनीत होते हैं। बहुत भक्त लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, अपने कामनाएं पूरा करने के बाद वो दर्शन लेके पुनीत हो जाते हैं। Holding the light of devotion in their hearts, devotees throng Sharan Bashveshwar temple every year to seek blessings from their Lord with hopes of getting their desires fulfilled. That's all we have for you in this week's episode. Goodbye and take care.